हे गाइस, आज मैं आपके लिए ग्रामर सेशन में टॉपिक लाई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे इन अ वेरी डिटेल्ड वे एंड अ बेस्ट एंड इजीएस्ट वे विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स का मतलब है पार्टीशन, मतलब हम सेंटेंस का पार्टीशन बनाते हैं एंड देन वी फ्रेम अ सेंटेंस। Partition, sentence, speech मतलब sentence. Okay, so the partition of sentence according to uses of words. Words को हम जिस तरीके से use करेंगे is called as parts of speech. हम words को मिला के complete meaningful sentence बनाएं, इसके हम कहते हैं parts of speech. Okay, so next. There are 8 parts of speech. First is noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunctions and interjection. अब इसके बारे में हम I will explain you each and every definition with number of example. Okay, so next. Our first part of speech is noun. Noun का मतलब क्या है कि naming word of person, place, animal or thing. उसको हम noun कहते हैं, मतलब naming word. किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में और थिंग के बारे में, कोई भी चीज के बारे में नाम लिखा हो, नाम मेंशन किया हो सेंटेंस में, उसको हम नाउन कहते हैं. सो एग्जांपल, अकबर वाज अ ग्रेट किंग. सो अकबर इज अवर नाउन एंड किंग इज अवर नाउन. नेक्स्ट, द रोज स्मेल्स स्वीट. सो द रोज इज अवर नाउन. नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइट. So the sun is our noun. Next, adjectives. अब adjective मतलब क्या? Is a word used to add something to the meaning of noun. So noun में meaning add कर रहा है, उसको हम कहते हैं adjective. Sentence. Ram is brave boy. Now noun क्या है? Ram. Ram is our noun. राम कैसा है? ब्रेव बॉय है. सो ब्रेव इज अवर एडजेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट, सोनल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सो सोनल इज अवर नाउन. सोनल कैसी है? इंटेलिजेंट. सो दैट इज अवर एडजेक्टिव. नेक्स्ट, द ट्री नियर माई हाउस इज बिग. सो ट्री इज अवर नाउन. ट्री कैसा है? बिग. So big is our adjective. Clear? Next, pronoun. Pronoun का मतलब है is a word used instead of noun. मतलब noun के बदले हम जो word use करते हैं उसको हम कहते हैं pronoun. Okay. Now few pronouns are there, like example I, we, himself, mine, them, which, what, herself and so on. Those are considered as pronoun. Example, John is absent. Now John is our noun because he is ill. So he is used instead of noun. So he is our pronoun. Clear? Next, the books are where you left them. So books are our noun and them is used instead of pronoun, instead of noun. So this is our pronoun. Clear? Next, verb. Verb मतलब is a word used to express an action or state. मतलब situation को express कर रहा है. It denotes the action, possession, condition and experience. Okay, so verb, let us consider an example कि she is doing a splendid job. क्या कर रही है? She is doing. So this is our verb. Next, I have something to tell you. मेरे पास कुछ है कहने के लिए. So have and tell. These are our verb which says an action. Next, he feels much distressed. So feels. Feels is our verb. Okay, next. Next is adverb. Adverb मतलब a word supports or add something to the meaning of verb, adjective and another adverb. Okay, मतलब
मतलब जो वर्ड मीनिंग ऐड कर रहा है वर्ब में एंड एडजेक्टिव में, दोज आर कंसिडर्ड एज एडवर्ब. एग्जाम्पल, he worked the sums quickly. So worked is our verb. कैसे वर्क किया उसने? क्विकली. सो क्विकली इज अवर एडवर्ब. क्लियर? नेक्स्ट, द वर्क्स, she works delightfully. Works is our verb and delightfully is our adverb. Next, Janvi pronounced the word correctly. So pronounced is our verb. कैसे? Correctly. So correctly is our adverb. Clear? Next, preposition. Preposition मतलब a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stands in a relation with something else. Those are known as prepositions. Okay, just example, in, on, under, above, those are preposition. Example, there is a cow in the garden. Clear? There is a writing pad on the table. So ये सब क्या है? Which add to the meaning with noun and pronoun, which add something else, makes a preposition. She gazed at what I say. Clear? Next, conjunction. Conjunction मतलब क्या कि a word used to join words और सेंटेंस, मतलब जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है वर्ड को और सेंटेंस को ज्वाइन करने में, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में, वो पर्टिकुलर वर्ड हम कहते हैं कंजंक्शन. एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर कजिन. राम एंड हरी मतलब make a single sentence join to sentence while adding this word and. So next, I ran fast but missed the train. So those are considered as conjunctions. I will watch it while you sleep. ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को मिलाने में जो एक वर्ड को यूज किया है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन. नेक्स्ट, interjection. Interjection मतलब क्या कि a word which express some certain feeling, जो feelings को express कर रहे हैं, whether it is sad or happy, उसको हम कहते हैं interjection. Okay, example, hooray, we won the game. So hooray is our interjection. यहाँ पे ये exclamatory sign होगी ही sentence में, उसको हम कहते हैं interjection. मतलब this sign identifies which expresses your feeling. Okay, next, oh, it is a pleasant night. Alas, I feel pity at his death. Clear? अब यहाँ पे definitions का explanation खत्म हुआ. Now I will teach you कि ये 8 parts of speech, how you will identify together in particular sentence. Okay, next. Now there are few sentences which will help you to identify the parts of speech. There won't be any confusion after the explanation which I have done in above. Okay, so let us start with our exercise. First sentence, they rise with morning lark. So rise is our verb. Clear? Next, the carriage moved on hastily. So hastily is our adverb. Clear? Next, he sat on a stool. Now he, which adds to the meaning of noun. So he is our pronoun and on is our preposition. Clear? Next, alas, exclamation mark. So this is our interjection. Alas, I missed her. I is our pronoun. Clear? Next, he took his lunch and went to the city. He and his is our pronoun and which join the two sentences. This is our conjunction. Clear? Now he is very hungry. So he is our pronoun and hungry is our adjective.
Clear? So here we end with our today's session parts of speech topic. Hope you liked it. और कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट, you just add to my comment box. Will reply you as soon as possible. Thank you.